Hello friends, I am Mandeep Singh Bhatia and I welcome all of you to my channel Bhatia Academy. दोस्तों आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है एनपीओ चैप्टर की। बेसिकली एनपीओ होता क्या है? एनपीओ मतलब क्या हो गया आपका? एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म। व्हाट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग? दे आर नॉट वर्किंग एग्जैक्टली फॉर प्रॉफिट और विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। इनका जो मेन रीजन है इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। ओके, सेकेंड थिंग, वॉट एवर अर्निंग्स दे आर गेटिंग, जो भी इनको अर्निंग्स होती है, दे आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू इट्स मेंबर। ये अपने मेंबर्स को ये अर्निंग्स कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। फाइन। तो ये तो बात हो गई दोस्तों किस चीज़ की? ये बात हो गई हमारे एनपीओ चैप्टर की कि एनपीओ चैप्टर में एनपीओ का मतलब होता क्या है। सी बेसिकली कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन रन करो, बेसिकली अकाउंटिंग इज नीडेड, राइट? सो इन सेम वे इन एनपीओ ऑल्सो अकाउंटिंग प्रोसेस इज देयर। सो लेट्स टॉक अबाउट कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होगा आपके एनपीओ का। In your NPO, right? In your NPO accounting process, in question what will be given to you? In question receipts and payments will be given to you. आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आपको क्वेश्चन में receipts and payment दिया हुआ है दोस्तों। And using this question in receipts and payment, you have to make what? You have to make it इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्लस बैलेंस शीट। आपको दो चीजें बनानी होगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्लस बैलेंस शीट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट कि ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट क्या है। हम पहले देख लेते हैं कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स क्या होता है। सी आपने ये तो पता ही होगा, लाइक यू ऑलरेडी नो व्हाट इज कैश बुक in organization side, in profit organizations when we are doing sole proprietor business, right? So basically let's talk about what is this receipts and payment. Receipts and payment, if we talk in easy manner, so it is nothing, it is your cash book. बेसिकली हम बिजनेस में एक कैश बुक मेंटेन करते हैं। इन सेम मैनर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में व्हाट वी आर मेंटेनिंग कैश बुक। हम एनपीओ में एक कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं, उस कैश बुक का नाम क्या है? व्हाट वी नेम इट एज या रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। दैट्स राइट, एग्जैक्टली। इस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में आपको सब कुछ दिया रहेगा जो भी रिलेटेड टू योर रिसिप्ट्स है एंड जो भी रिलेटेड टू योर आपके payments hai. Whatever related to your receipts and whatever related to your payments, that all will be given to your into your which account? Receipts and payment account. See basically when it is given to you, it is not easy to memorize this pro forma और हमें करना भी नहीं है। I'm not asking you or saying you to memorize this pro forma of receipts and payment, but instead what we can do, we can make it easy. पहले हम एक एनालाइज कर लेते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स को। व्हाट आई एम डूइंग टू मेक इट इजी, ओके, टू मेक our income and expenditure solution easy, I am dividing my receipts and payment into two types दोस्तों। receipts I am saying there are two types of receipts, regular receipts and second I called as what? non regular receipts। एक को हमने टर्म कर दिया क्या? रेगुलर रिसिप्ट्स, और दूसरे को हमने क्या टर्म कर दिया? नॉन रेगुलर रिसिप्ट दोस्तों। इन सेम मैनर पेमेंट्स को भी हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? टू पार्ट्स में। वन आई कॉल्ड एज व्हाट? रेगुलर पेमेंट एंड सेकंड आई कॉल्ड एज व्हाट? नॉन रेगुलर पेमेंट दोस्तों। फाइन, आई होप यू आर ओके हियर। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बट लेट्स टॉक अबाउट, ठीक है अभी भी क्लियर नहीं है, सो हमने इसको इजी करने के लिए क्या किया कि जो भी नॉन रेगुलर रिसिप्ट है और नॉन रेगुलर पेमेंट है उसको पहले समझ लेते हैं। इफ एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज इज देयर, that becomes your non regular payment and non regular receipts। बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि यार कोई भी मैं सेल करता हूँ एसेट्स का, राइट, तो वो मेरा नॉन रेगुलर रिसिप्ट है। आई एम सेइंग कि मैं फंड्स जनरेट कर रहा हूँ थ्रू लोन्स, आई एम जनरेटिंग माय फंड्स थ्रू लोन, सो वो क्या हो गया? नॉन रेगुलर रिसिप्ट। आई एम गेटिंग एनी इनकम फॉर स्पेसिफिक रीजन, जैसे कि लेट्स से कि इफ आई एम गेटिंग डोनेशन इन माय एनपीओ, okay, for tournament or for construction of building or for library or for books, any reason is mentioned with any particular receipts and payment, that is your non-regular। so basically involvement of asset and liabilities is non-regular, plus if any specific reason is given with your receipts and payment, so that is also non-regular। if I'm saying purchase of asset, repayment of liabilities, so it's a non-regular payment। now accept this part, whatever left, अगर आप इन चीजों को हटा देंगे, जो भी बचा, दैट वी कॉल्ड एज व्हाट? दैट वी कॉल्ड एज सिंपली रेगुलर रिसिप्ट। सो व्हाट इज रेगुलर रिसिप्ट? एक्सेप्ट नॉन रेगुलर रिसिप्ट, ऑल कैटेगराइज्ड अंडर द हेड ऑफ regular receipts, okay, except non regular payment, all are categorized under
regular payment heads. Okay, fine. I hope यहाँ तक clear होगा आप लोग को. Let's take a look ना better. So here one pic is given to you in question. If you see this pic, here salary it is saying salary, rent, postage expenses, advertisement expenses, newspaper, repairs, audit fee. See all these are regular. क्योंकि इसमें ना तो एसेट का इन्वॉल्वमेंट है ना तो इसमें लायबिलिटी का इन्वॉल्वमेंट है, राइट. सो बेसिकली और ये है भी रेगुलर में. रिवेन्यू नेचर क्या है? सो व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज रेगुलर, दिस इज रेगुलर, दिस इज रेगुलर, 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 repairs regular, audit fee regular, maintenance expenses regular, insurance regular, honorariums regular, municipal taxes, honorariums, price distribution regular. All these are regular. But when I reach to purchase of assets, see यहाँ पे बोलता है purchase of assets. Basically if you are getting confusion regarding assets, so assets मतलब I hope सबको पता होगा. But to make it easy, what I am saying, if we can touch anything that is our asset, that is tangible assets. This is 99% time it happens, I am saying, to make it easy. एंड एक्सेप्ट दैट और क्या हो सकता है एनपीओ चैप्टर में? इन्वेस्टमेंट भी हमारे एसेट्स हैं. सो बेसिकली इन्वॉल्वमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी एसेट इज नॉन रेगुलर. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपके लिए दोस्तों एनआर. दिस इज एनआर. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज एसेट. फिक्स्ड एसेट्स, फर्नीचर, बिल्डिंग एक्सेट्रा एसेट्स. बुक्स आर योर एसेट. इन्वेस्टमेंट्स आर योर एसेट. लोन्स इज योर लायबिलिटी, नॉन रेगुलर, राइट. बिल्डिंग्स अगेन इज योर नॉन रेगुलर. In same manner दोस्तों, let's talk about receipts part. Okay, let's talk about receipts part. When I'm saying subscription, first of all, what is the meaning of subscription? It is the monthly payment what NPO is getting from its member. ये monthly charges है जो who is paying members of NPO. So this is what we call subscription. Non-regular, right? General donation, no specific reason is given. Sorry, my bad actually. So what is the meaning of subscription? Subscription is nothing. Subscription is here that part which NPO is receiving from its member on monthly basis. Okay, let's say today I want to join any NPO, I have to pay monthly. I am paying, but for NPO the same thing is income. So it's a regular. General donation, no specific reason is mentioned. So regular. Specific donation. When I'm saying specific, what specific stands here for any particular reason. So non-regular. Grants for specific purpose, non-regular. Admission and entrance fees are regular. General grants are regular. Newspaper regular. Everything is regular here. Any kind of interest received, dividend received, any miscellaneous receipts are regular. Yeah, here comes the life membership fee. So friends, life membership fee is non-regular. Why? Because its nature is related to liability. How? Because one person is paying for its lifetime, right? And received in advance we call as liability in business generally, right? So same thing applicable here कि अगर आपको कोई बंदा पूरे लाइफ का पेमेंट कर रहा है एडवांस में, so this is nothing, this is capital nature, right? So we call it as non-regular. Subscription for specific purpose, non-regular. Legacies are basically non-regular. Any kind of funds are non-regular. Sale of fixed assets, non-regular. Now why we are talking about this categorization, friends? Basically whatever non-regular things you can see in question, we have to leave it. And when we are making this income and expenditure, we have to count only and only regular expenditures and regular incomes from your receipts and payments. आपके receipts and payments में से हमें क्या काउंट करना है? Only regular expenditures and regular incomes. So friends, here is the pro forma of income and expenditure. Now basically what is income and expenditure called? In NPO, income and expenditure is nothing. It is profit and loss account for NPO. Okay, now when we are making this NPO, right, when we are making this income and expenditure, friends, basically in expenditures we are going to count all regular kind of expenses plus any interest paid, any kind. See, interest paid is regular in nature, but I'm writing it separately for you. And if we are getting any loss on sale, I'm saying, I'm not talking about sale of asset, I'm saying if any loss happens or if any profit happens in sale of asset transaction, right? This is what maximum we have to count in income and expenditure, friends. This is the maximum thing I'm saying you have to do in categorization.
Let's check one question. Let's try one question using the same concept where adjustment is not there, because हमने adjustments का अभी तक कोई बात किया नहीं है, right? So here is one question for your NPO दोस्तों. It says prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2021 from the following. Okay, here आपको क्वेश्चन में एक साइड पूरा रिसिप्ट्स दिया हुआ है और एक साइड पूरा पेमेंट्स दिया हुआ है. Basically, this balance brought down and balance carried down stands for your opening balance of cash and closing balance of cash respectively, right? Basically, this balance brought down and balance carried down stands for opening cash and closing cash. Now let's talk about regular and non-regular, because we know already कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ रेगुलर नेचर के चीजें ले जाना है, right? In an income and expenditure, we are going to take only regular expenditures and regular incomes. That's it, nothing else. Okay, so here we go. Let's say the first thing given here is salaries. The first thing given is salary. Salary क्या nature है इसका? It's a regular, right? Okay, rent regular, stationery regular, defense bond it's an investment. Defense bond basically क्या nature का investment है, so it's a non-regular. Okay, it is non-regular in nature, so NR. I'm saying furniture definitely asset है, non-regular. Bicycles non-regular because it's an asset. Closing balance of cash asset है, non-regular. Okay, now let's talk about receipts, friends. If I'm saying for subscriptions, right? Subscriptions का nature क्या है? Regular है, definitely regular है, so here I'm writing R. Sale of investment, no, will not count the sale of investment because investments are an एसेट, एंड एसेट कौन से नेचर का हो गया? नॉन रेगुलर का हो गया. सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर गाइस, दिस आल्सो विल नॉट काउंट. दिस 30,000 आल्सो विल नॉट काउंट बिकॉज इट इज नेचर ऑफ नॉन रेगुलर. बट वन थिंग फ्रेंड्स, इफ यू ऑब्जर्व हियर बुक वैल्यू इज गिवन 40,000. हमारा जो बुक वैल्यू है फर्नीचर का वो है 40 और जिस पे हम बेच रहे हैं वो है 30. सो इफ यू सी व्हाट हैपेंस, प्रॉफिट और लॉस, 40,000 का हमारा फर्नीचर है और 30,000 में आप बेच रहे हैं, तो बेसिकली हियर लॉस हैपेंस, राइट? सो लॉस इज हियर, सो आई एम सेइंग if any loss and profit is there on sale, that we need to count. So I'm saying okay, this loss is going to be regular. Then next it says donation. Donation is obviously regular. So let's try this question, friends. Okay, let's try this question. Here I'm going to record all regular nature items. So here I go with salary to salary 4,80,000. Second it says rent. So here I'm saying to rent. It says 50. So I'm saying 50,000. Next it says stationery. Stationery, it says stationery. So here I'm writing to stationery. Stationery is 20,000. Next it says defend bond, definitely will not count. Furniture, bicycles, cash will not count. When we come to income part, receipt part, it says subscription. So here I'm writing by subscriptions 9 lakhs. Next it says sale of investment, definitely it will not come. Sale of old furniture, it will not come, but loss is there, so that loss here I'm counting on expenditure side. To loss on sale. On sale of what? On sale of furniture. So to loss on sale of furniture, it is 10,000. After that it says donation. Donations are regular in nature, it's income. So here I'm writing by donation. Donations are given to you is 10,000. I think all we did categorization, and as adjustments is not given outside, and even we didn't discuss still, right? So I'm doing it without adjustment only. So यहाँ पे हमने किया इसका total. As we can see, this side income side is 9,10,000. As we can see, income side total is 9,10,000, and expenditure side total, if we do, how much it is coming, guys? 4,80,000, 5,30,000, 50, 65,60,000, friends. So as we can see, income is greater than your expenditure. So here I'm writing 9,10,000, and
इनकम जब आपके एक्सपेंडिचर से ज्यादा बड़ा है तो प्रॉफिट होगा डेफिनेटली, बट वी कैन नॉट रेडी हैव प्रॉफिट बिकॉज दिस आर नॉट वर्किंग फॉर प्रॉफिट एंड लॉस मोटिव, राइट? सो व्हाट दे आर कॉलिंग इट एज सरप्लस. जब इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा होगा वी कॉल्ड इट एज व्हाट? That's right, surplus. And how much difference we are getting? If we are going to find out difference, the difference we are getting is 9,10,000 minus 5,60,000. So the answer we are getting here is 3,50,000. I hope you got the concept. Thank you very much for watching the video. Thank you very much, dear.